Okay, we are going to start today with the solar system and how the Earth has formed. Just the basic story of it, and then we'll move on to the rocks. तो आज हम आपको सोलर सिस्टम बेसिक बताएंगे और फिर हम उसकी रॉक की डिटेल पे जाएंगे. तो सोलर सिस्टम 4.6 billion years ago स्टार सन और सोलर सिस्टम was formed. उसकी हुआ ये था कि ड्यू टू द एक्सप्लोडिंग ऑफ द सन स्टार, जो कि हम जानना चाहते हैं कि इट्स थर्ड जनरेशन स्टार which was nearby, and it exploded, and as a result of it the gas or dust was formed. What happened was that the uh, gas cloud properly formed, and it turned into a center which had collected atoms, and they were basically hydrogen and helium, and they were generating gas, and it was all surrounded by the dust particle which circulated and collided and kept on sticking together, and they kept on colliding together, and lump by lump increase number of lumps of rocks resulted in the formation of the planets surrounding this center sun. So hence, due to the collision, it started rotating in the form of disk. As the disk was formed and the dust particle kept on removing in circular motion, those particles turned into planets, and that's how the whole Earth was formed. Then comes the structure of the Earth. The structure of the Earth, basically, what it is center core, जो core है, which is solid core, and inner core उसको कहा जाता है. It is made up of nickel and iron, and then the outer layer is the molten, and it is also made up of nickel and iron. The center core also has okay, it also has the radioactive elements uranium, which increase the temperature of nickel and iron, and the core has a round temperature of 500 degrees C. Now this 500 degrees C temperature is quite high. If you look at this temperature, this is quite high. And as a result of this high temperature, we should feel that the center is solid, but it's not. Why it's not solid? Because of the increase in pressure of the material surrounding it. The surrounding layers which are surrounding the Earth and the center core is so solid, although it is at 5,000 degrees C. Then we come the outer core, which is liquid, and you can see the inner core is solid, the outer core is liquid, and it also has got nickel and iron. It surrounds, and as the earth revolves, it also revolves. The speed of revolution of the liquid and the solid is different, and hence a magnetic field is created. This magnetic field which is created results in basically formation of this this difference in the speed cause the formation of magnetic field. So in detail, if you look at this surroundings and earth and all the surfaces, we can tell that the second layer of earth after this is basically, we coming back to it, is basically here the structure. If you look at it, the outer layer is called mantle, and now mantle is basically made up of rocks, and rocks, if we look at the rocks are basically iron, we have silicon, we have oxygen, we have magnesium, and all these form silicates, and these rocks are mainly form of compounds. Compounds are combination of these different elements together and forming different compounds. So these compounds join together and it gives this mantle its structure, and this is all mostly rock.
in the form. It is basically, the thickness is 2900 kilometers, and out of it, the inner 2000 is solid, and slightly liquid portion is this outer 900 kilometers. Um, so the melting point, okay, the temperature of this area is about 1500 degree C. So this, the top layer, which is not under a lot of pressure, is slightly paste-like. The paste can be compared with the toothpaste, and it is like toothpaste in this area, this mental area. And then comes the top layer, which is called the crust, which is the outermost layer, and it is cool, and the rocks in this are cool as well. But as the campers and miners go down into the layer, they feel the warmth as they go down deeper. So that's the whole layer. Basically, summarize it. The inner layer is core, then inner core, outer core, and then comes the mantle. Mantle is mainly made of silicates and rocky, and then the crust. Crust is the outermost layer. Okay, then coming back to the next portion, which is basically the rock. As we've seen how the earth surface is and how everything works, then we can come towards the rock cycle. And while going through the rock cycle, I will be discussing every part of it, how the rock cycle works. So this picture actually shows a lot of it. This is a simple diagram through which different scientists have tried to explain how the rock cycle works. Where do the rock come from? This is one question. How different types of rock are formed? These are the two questions that are answered by this. This is extrusive indigenous rocks, and then there are intrusive indigenous rocks. As the picture show, there is a mountain and there is lava coming out of it. The extrusive indigenous rocks are basically formed as a result of the extrusiveness of the indigenous rock. So the whole cycle actually starts. The first point you should know is magma. Magma is put from the partial melting lower crust, and the upper mantle layer. So the lower crust and upper mantle layer together forms the magma. So magma is molten, and as it goes up, it can come out of the volcano, as extrusive indigenous volcanoes can result in formation of extrusive indigenous rocks. What happens here is that there are basically one extrusive indigenous rocks, and there are also kind of volcanoes where the lava actually comes out with a lot of pressure, and it is immediately exposed to air and cold environment. So it cools down so quickly that there is no crystal formation, whatsoever. So this is andesitic rock, and then basaltic kind of volcano result in the formation of crystalline, but these crystals are small, because at the end of the day, this is extrusive rock. It's not taking a lot of time to come out, but still it's slower than the andesitic one, and thus the basaltic one comes out slowly. Small crystals are formed, and as a result of crystallization, of small crystallization, it turns into basaltic rock. So these are also indigenous. There is another type of indigenous rock, which is intrusive indigenous rock. This
this is formed when the magma rises up and it cools down inside the Earth's crust, but it cools down slowly as it is happening inside the Earth crust, and as a result of long time of cooling and slow cooling, there is a lot of crystallization. So big crystals are formed, and this is what we call granite. And after the granite is formed, we can see there is slow uplift of this in intrusive indigenous rocks, and then the other kind of rocks that come out onto the surface, slightly onto the surface or break through the surface, called the cause and the withering and the erosion of the top layer result in the fragmentation of those rocks, and these fragments go down as particles and are deposited in the seabeds, and the seabeds they get buried, and cementation results in there is different layers are formed and cementation forms, and this cause the formation of sedimentary rocks. These sedimentary rocks can be buried down deeper, and increase in temperature and pressure can result in the change of form, and this change of form result in the formation of metamorphic rock. And then if we look into further types of rocks, we can see that one type of rock here we can, according to this rock cycle, we have extrusive and intrusive indigenous forms. So basically हमने अभी तक क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास टाइप्स ऑफ रॉक्स हैं, इसमें एक्सट्रूसिव रॉक्स बनते हैं, इसमें intrusive. These both types are types of fire rocks which are the मैग्मा की बेस पे बनता है, और मैग्मा जो फायर रॉक्स बनाती है, these are igneous rocks. एक्सक्लूसिव में हमारी कौन सी हैं, जो अर्थ सरफेस पे पहुंचते हैं और स्मॉल क्रिस्टल्स फॉर्म में भी बन सकते हैं, और स्मॉल क्रिस्टल्स जो बनते हैं दैट आर जो एयर है वो कूल डाउन कर देती है, स्मॉल क्रिस्टल बनती है, बाल्सेटिक बन जाते हैं, और इंडिजिनस इग्नियस हमारे रॉक्स जो हैं उसके अलावा बन रहे हैं, फॉर्म हो रहे हैं, जो कि फर्दर हम देखते हैं कि ये जो अर्थ क्रस्ट के विद इन बनते हैं, और इनसाइड थोड़ा टेम्परेचर हायर होता है, लॉन्गर टाइम मिलता है, तो लार्ज क्रिस्टल्स बनते हैं, एंड ग्रेनाइट इज द फॉर्मेशन. अब हम अगर देखें कि हमारे इग्नियस रॉक्स में ग्रेनाइट है और बाल्सेटिक है. बाल्सेटिक हमारा अलग से अगर देखा जाए तो न्यूक्लियर पावर रिएक्टर्स के सराउंडिंग्स के लिए, कोटिंग्स के लिए, ताकि स्केप ना करें रेडिएशंस, इसलिए ये होता है. Granite is very hard and it can form the foundation. Balsatic is also hard, so they are used for making of roads and buildings, and polished and attractive surfaces of granite can be used for decorative work on the buildings and libraries and other places. So the same extrusive rock, अगर ये हमारा extrusive rock जो है ये इस तरह से बने कि इग्नियस रॉक्स एक्सट्रूजन जो स्लो तरीके से हो रही है, एकदम से रैपिड अगर हो जाए, जो कि हमने देखी है एंडेसिडिक वोल्केनोज में, जिसमें रॉक्स जो हैं वो बनते हैं रैपिड कूलिंग इन द एयर से, और क्रिस्टलाइजेशन नहीं होती, नो क्रिस्टल्स आर फॉर्म. उसमें एग्जांपल है ऑब्सिडियन, ब्लैक ग्लासी रॉक्स की, जो कि देर आर ब्रोकन एंड दे आर वेरी शार्प, एंड कटिंग एजेस आर यूज टू फॉर्म द नाइफ के लिए यूज होती हैं, बोज एंड एरो के लिए यूज होती हैं. फिर आप आ जाएं तो इसी में रैपिड कूलिंग वाली जो है, एक तो लावा जो एकदम से निकला वोल्केनो से, इसका लिक्विड पोर्शन जो है वो बनाएगा दीज ऑब्सिडियन रॉक. बट जो आपका फ्रॉथ है, जो झाग आगे पीछे बनती है, जो चीज आगे पीछे इसके साथ फ्रॉथीनेस है, तो बबल्स विद द गैस इन द हॉट रॉक क्या करते हैं, वो एस्केप करते हैं, पोरस रॉक बनता है जिसको कहते हैं प्यूमिस, एंड कैन फ्लोट ऑन द वाटर सरफेस, एंड इट्स वेरी पोरस.
सो दीज आर बेसिकली मेन इसका जो फंक्शन अगर देखा जाए तो हमारा कंक्रीट के ब्लॉक्स बनाता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स के लिए कंक्रीट ब्लॉक्स बनाता है, और वो लाइट वेट होते हैं और पोरस होते हैं। तो रोमन्स ने इसको बहुत इस्तेमाल किया है, और उसके अलावा ये टूथपेस्ट में भी इस्तेमाल हो रहा है। अब अगर हम देखें तो एक और जगह पे हम मतलब एक और चीज़ हम देखना चाहें तो वो है, हमने जो पहले भी पढ़ा था वो था कि हमारे जो ये रॉक साइकिल है उसमें हमने एक्सट्रूसिव, इंडिजिनस और इंट्रूसिव, इग्नियस इग्नियस रॉक्स रॉक्स पढ़ लिए, और विदरिंग से हमने कहा था कि सेडिमेंट्री बनते हैं, और अगर उसकी फॉर्म चेंज हो तो मेटामॉर्फिक। तो अब हम आएंगे मेटामॉर्फिक और इस पे मेटामॉर्फिक रॉक्स पे और सेडिमेंट्री रॉक्स पे। सो फर्स्ट हम पढ़ लेते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हैं। I have briefly, before going back, I'll go back in एंडिसिटिक और बैलिसिटिक। हमारी बेसिकली दो टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज हैं जो बहुत हाई प्रेशर से, ह्यूज एक्सप्लोजन से निकलती हैं। उसमें डस्ट और रॉक्स और हाई इन एटमॉस्फेयर जाती है, जिसमें कोन शेप्ड होती हैं। लेवल लावा कूल कर जाता है ऑन द साइड्स ऑफ द एंडिसिटिक वॉल्केनोज की वजह से उसकी कोन शेप बन जाती है। बैल्सिटिक से, बैल्सिटिक एंड में सॉल्ट निकलता है, और इससे हमें हमने देखा था कि ऑब्सिडियन रॉक बन रहा था और प्यूमिस बन रहा था। तो इससे बैल्सिटिक में ये होता है कि लो प्रेशर है, फ्लैटर होते हैं, शील्ड वॉल्केनो है, लेस वायलेंट है, स्टेडी है, कंटिन्यूस इरप्शन हो रही होती है, अंडर द सी भी जा रहा होता है, ज़्यादातर सी फ्लोर्स में होता है, हवाईन आइलैंड्स में हमने देखा। और इसके रिजल्ट से हमने ज़्यादातर देखा है कि हमारे बैल्सिटिक सॉल्ट भी इसी नाम से हमारे पास ये आया है। सो कमिंग बैक टू इट, कि हम कह रहे थे कि हमने ये सॉल्ट रॉक साइकिल हमने पढ़ा था, जिसमें हमने एक्सट्रूसिव, इंट्रूसिव पढ़ लिए थे। हमारा अगला रॉक था सेडिमेंट्री, और सेडिमेंट्री रॉक हमने इस तरह से पढ़ना है कि हमने इसमें 3 फॉर्म्स देखी थी बेसिकली। तो 3 फॉर्म्स में हमारे पास आती है रॉक की फ्रेगमेंट्स की वजह से, जो कि हमने कहा था कि विदरिंग और इरोजन से, यहाँ से टॉप लेयर से जो स्लो अपलिफ्ट ऑफ टू द सरफेस होती है नीचे के रॉक के, विदरिंग होती है, स्मॉल पार्टिकल्स और साउंड स्मॉल ग्रेन्स जो हैं rivers के थ्रू they go and settle under the river, under the seabeds, and layers by layer बनती हैं। thousands of years के बाद thickness इनकी increase हो जाती है, पार्टिकल्स प्रेशराइज हो जाते हैं टुगेदर और बाउंड करते हैं आपस में मिनरल से, और फर्म रॉक बना देते हैं। इसकी एग्जांपल सैंडस्टोन है, पेबल्स है, कोग्लोमेरेट्स बनाते हैं, स्लिट है, स्लिट स्टोन्स बनाते हैं, क्ले और मड स्टोन्स बनाते हैं। तो एंड में सैंड स्टोन्स और मड स्टोन्स बेसिकली हमारे पास आ जाते हैं। तो ये हैं सारे फ्रेगमेंट्स जो उस प्रोसेस से आ रहे हैं। फिर सेडिमेंट्री और कौन से किस चीज़ के सेडिमेंट्स होते हैं? रॉक्स फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ लिविंग थिंग्स। इसमें शेल्स आती हैं, लिविंग थिंग्स की सेडिमेंट्स होते हैं, रॉक्स हैं, शेल्स हैं, जिससे जो उसके मोलस्क्स के बच जाते हैं बॉटम ऑफ सी पे, उसमें लाइमस्टोन बन जाता है, और चॉक बनता है टाइनी शेल्स से। लार्ज शेल्स कलेक्ट टुगेदर और मोलस्क वगैरह, उसकी वजह से हमारे लाइमस्टोन्स बन जाते हैं। फिर हमारे पास थर्ड है जी, रॉक्स फ्रॉम ड्राइड अप सी वाटर और केमिकल्स हमारे पास हैं, ठीक है। वो मिनरल्स और रॉक के साथ वॉश आउट होते रहते हैं, रिवर्स और सी के बेस पे जाते रहते हैं। एज द रिवर ड्राइज आउट, इवेपोरेशन हो रही है, इवेपोरेशन वुड रिजल्ट क्या उससे होगा? इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दोज मिनरल्स एंड केमिकल्स। एज अ रिजल्ट वो आपस में ज्वाइन करके रॉक बना देंगे, जिसको कहते हैं वेपोराइटस, रॉक सॉल्ट और जिप्सम। तो ये हमारे बेसिकली डिफरेंट फॉर्मेशन होती है जो हम देख रहे होते हैं कि क्या बन रहा है, सेडिमेंट्री रॉक्स कैसे बन रहे हैं। तो हम इसमें अगर आगे देखें कि इसके यूजेस क्या हैं, तो हमने लाइमस्टोन जब देखा तो उसको हम देखते हैं कि ये सी बेड्स की बेस पे लेयर बाय लेयर क्योंकि होते हैं, जॉइंट होते हैं, जो ईजिली ब्रेक किए जा सकते हैं बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह। इजिप्शियंस ने इनको यूज़ किया
सैंडस्टोन्स को, लाइमस्टोन्स को। लाइमस्टोन चिपिंग्स यूज होती हैं रोड्स की कंस्ट्रक्शन में, फाइन ग्राउंड लाइमस्टोन्स और सीमेंट्स के लिए यूज होती हैं, सीमेंटिंग मटेरियल के लिए। और केमिकल रॉक सॉल्ट है। रॉक सॉल्ट हमारे जो बनते हैं यहाँ पे, हमारे वेपराइटिस रॉक सॉल्ट बना था जो इवेपोरेशन ऑफ सी की वजह से बना था, तो वो हमारा यूज हो रहा है। रोड पे हम डालते हैं टू डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आइस। तो जब लोअर डाउन टेम्परेचर होता है, आइस नहीं बनती, उसका रिजल्ट क्या होता है कि इट प्रिवेंट्स द आइस फॉर्मेशन जब स्नो हो रही होती है। फिर जिप्सम है, सीमेंट है, प्लास्टर, ये दोनों के लिए यूज होता है। जिप्सम के अपने बहुत सारे यूज हैं। फिर हमारे पास आ जाता है मेटामॉर्फिक मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक या मेटामॉर्फोज क्या होता है? चेंज ऑफ फॉर्म। ये जो हमने इग्नियस रॉक्स पढ़े थे, इधर इधर भी पढ़े, फिर यहाँ पे भी टाइप्स में इग्नियस रॉक्स पढ़े, फायर रॉक्स भी इनको कहा जाता है। ये फायर रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स जब डीपर लेयर्स में जाते हैं यहाँ पे, तो ये स्टेट चेंज कर लेते हैं, जिनको मेटामॉर्फिक रॉक्स कहा जाता है। तो इसकी वजह से इवेंचुअली ये भी ऊपर टॉप लेयर्स में पुश आउट होते हैं और अर्थ क्रस्ट में हमें फिर नजर आ जाते हैं। इसमें हमारे पास लाइमस्टोन अगर देखा जाए, जो कि हमारा ओरिजिन था हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक का। कौन सी टाइप थी ये थी जी रॉकी सेगमेंट्स से जो हमारे बने थे। तो लाइमस्टोन हमारा हाई टेम्परेचर और उसके अंदर चेंज होकर मार्बल बना देता है। ऑन द शेल जो है वो स्लेट बना लेता है। और मार्बल हमारा ग्लिसनिंग, शाइनिंग, कलरफुल, डेकोरेटिव फर्नीचर वगैरह में यूज हो रहा होता है, एंड डेकोरेशन ऑफ बिल्डिंग्स के। ऑन द अदर हैंड हमारी और फ्लोरिंग्स के लिए हमारे पास शेल जो है जो कन्वर्ट हो गया स्लेट में। तो स्लेट इज वेरी लाइट वेट एंड इट इज यूज फॉर द शेड और द कवरिंग्स ऑफ द रूफ एंड रूफ टॉप्स में यूज हो रहा है, पूल कवरिंग्स में यूज हो रहा है, स्नोकर टेबल के कवर्स में यूज हो रहा है। इट्स वेरी लाइट वेटेड, इट इज वेरी नाइस। So that covers the whole rocks and the root structure.